हाय वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है बीन देयर डन दैट में। मेरा नाम है रोहिणी गुंसाल्विस और आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। So we're taking further our series on self-love. Many times we mistake self-love for selfishness. So I'm going to take today's session mainly to distinguish between self-love and selfishness. So when we talk about self-love, we oftentimes mistake it to be selfishness. And there's a huge difference between selfishness and self-love. कई बार जब हम सेल्फ लव के बारे में बात करते हैं तो कई बार हम लोग उसको सेल्फिशनेस के तौर पे भी सोचते हैं, और सेल्फिशनेस और सेल्फ लव में बहुत बड़ा अंतर है। हम इसके बारे में आज बात करेंगे। आई थिंक द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन सेल्फ लव एंड सेल्फिशनेस इज व्हेन वी achieve our personal happiness at the cost of somebody else's happiness. That is selfishness. And when we do it along with another person's happiness, with or without another person's happiness, that is self-love. Sometimes maybe what you love may not amount to another person's happiness, but it's not causing them discomfort or it's not causing them grief, and it's not disturbing their life. That could be self-love. कई बार हम जब अपने बारे में सोचते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति को दुख देते हुए अगर अपने बारे में सोचें तो वो सेल्फिशनेस कहलाएगा। Many times there's a conflict of interest, so to say, between you and the people in your life. So maybe that is the time when you just need to take a step and just look at what is happening, and is it happening at the cost of selfishness or is it happening at the cost of self-love? I'm going to give you an example about this in a bit. कई बार जब हम प्यार की बातें करते हैं तो हमें उसमें सोचना चाहिए जहाँ पे हम वो एक्शंस ले रहे हैं जो हमें पसंद है, जो हमें खुशी देती है। क्या वो एक्शन से दूसरे व्यक्ति को दुख हो रहा है या उनको तकलीफ हो रही है? इसके बारे में सोचना ज़रूरी है और हम इसके बारे में बात करेंगे। इन माई लाइफ आई टुक अप अ डाइट, एंड when I started that diet, one of the mandatory things was to have a meal around 7:30 to 8. And in our house, we used to have dinner after 9:30, sometimes even after 10 or even 11. My mother doesn't have an appetite earlier than that, and so she doesn't like to have her dinner early. Now that it was mandatory for me from a health perspective, from the fact that I was doing a diet, I needed to eat earlier. It was very difficult for me in the beginning. I could never gather the courage to say, Mama, let's have dinner earlier. Finally, I gathered the courage. It was difficult for me, and I gathered the courage to come and tell Mama that, I am going to have my dinner at 7:30, and I'm going to come and sit with you when you have your dinner at whatever time you're having it. So I generally like to have a small dessert like a sweet or a fruit. So I have that with my mother when she's having her dinner. This continued for several months, and gradually Mama's time of dinner has started progressively coming closer to mine, and now we both come to a time where we both have our dinner at 8:30. It is not exactly the time that I used to have my dinner at, but it's not as late as my mom would have liked to have a dinner at, and it's not doing her harm. She's diabetic herself, so since she's eating earlier, it's helping her health too. So I think putting in the structure of choosing my life, my health, prior to her preferences, in that sense, not her health really, her preferences. I think what I could actually do is choose self-love, not at the cost of her, choose to do what works for me, not at the cost of her life, giving her the freedom to eat at whatever time she wanted to eat, and yet today we can eat at the same time because we are eating at a common time, we are eating at 8:30. जब कुछ समय पहले जब मैंने डाइटिंग शुरू की, मैंने अपने फर्स्ट सेशन में आपसे बात की थी कि मैंने डाइटिंग शुरू की एंड आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। उसका एक बहुत ज़रूरी हिस्सा था कि मैं टाइम पे डिनर करूं, टाइम यानी 7:30 बजे के आसपास मैं डिनर करूं, नॉट लेटर देन 8 PM। और मेरी मम्मा डिनर करती हैं 9:30 10 बजे, कभी कभी 11 बजे भी, क्योंकि उन्हें इससे पहले भूख नहीं लगती थी। जब मैं डिनर जल्दी करना चाह रही थी, वो एक ही समय है जब हम दोनों मिल के खाना खाते हैं, तो कहीं जाके मुझे बहुत गिल्टी फील होने लगा कि मैं एक मील है जो हम साथ में करते हैं और मैं जल्दी करूँगी तो मम्मा को अकेले खाना खाना पड़ेगा। तो कहीं जाके मैंने हिम्मत जुटा के मम्मा से बात कर ली इसके बारे में। मैंने उनको कहा कि मेरे डाइट की वजह से मुझे 7:30 बजे खाना खाना है, पर इसका मतलब है कि मैं आपके साथ खाना नहीं खा पाऊँगी, पर मैं क्या करूँगी कि आपके साथ बैठ के मैं कुछ अपना स्नैक, जैसे मैं डिनर के बाद कुछ मीठा या फ्रूट खाना पसंद करती हूँ,
तो वो मैं मम्मा के साथ बैठ के खाने लगी। कई महीनों तक ये चलता रहा, मेरा डाइट चलता रहा और मैं 7:30 बजे खाना खाती थी, मम्मा अपने हिसाब से खाना खाती थी। बट कहीं जाके आज की तारीख में ऐसे हो गया, धीरे धीरे से मम्मा का भी टाइम जल्दी होने लगा है और अब आज की तारीख में हम दोनों 8:30 बजे दोनों मिलके खाना खाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, बट मम्मा ने भी तो बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और उससे उनकी तबीयत के लिए भी अच्छा है क्योंकि वो भी डायबिटिक है। तो हम दोनों की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। अगर मैंने वो पहला कदम नहीं लिया होता तो मैं विक्टिम बनी रहती और मैं सारा टाइम यही सोचती कि मेरी मम्मा की वजह से मेरा डाइट नहीं हो पा रहा और मैं बहुत दुखी हो जाती और शायद ये रिजल्ट जो मैंने अपनी हेल्थ के एरिया में पाया है वो शायद मैं नहीं पा पाती। तो इट्स ओके टू रिक्वेस्ट, to tell somebody what you need and to see whether they can incorporate that in their lives. I think being able to talk to my mother about my need to eat early just empowered me in the area of my health, and I was able to pursue it so powerfully that we could actually, all of us, think about those small things, like if you have to mind your children or request your husband for some assistance, or you want to tell your wife to give you some me time, whatever it is that you need to make your life better, you should go ahead and just request people in your life to adjust and to give you that space. That's a good place to start in terms of self-love. Many times when we're thinking about self-love, we also need to introspect and we need to see whether we are being mean and whether we are being selfish when we are pursuing self-love. Self-love doesn't really mean trampling over other people. And it doesn't mean of gaining self-satisfaction at any cost. It means coexisting with whatever you are doing in your life and still pursuing what is important to you. जब हम सेल्फ लव के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब नहीं कि हम लोगों को दुख पहुंचा के अपनी खुशियां प्राप्त करें। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जब सेल्फ लव कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों की हम परवाह ना करें। तो अपने को जो चाहिए वो करना है, बट लोगों को दुख पहुंचाते हुए नहीं करना है। As a matter of conversation, we will talk about toxic people and we will just introspect whether we are one of those. Many times we end up encountering people who demand so much from us, our time, our attention, our compassion, our listening, and our sympathy in such a way that they drain us of our energy, and they are really like bloodsuckers. Like I said last time, as a matter of self-love, avoid being with such people. But it's time for us to also introspect and see whether we are one of those toxic people. पिछली बार हमने बात की थी कि हमें अपने आप को ऐसे लोगों के साथ घिरे रखना चाहिए जो हमारे लिए खुशी लाते हैं और ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए जो हमें दुख पहुंचाते हैं या जिनके साथ हम रह के अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। ज़िंदगी में कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारे से इतने एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो चाहते हैं कि हम उन्हें हमारा समय दें, वो हम उनकी बातें सुने, उनके दुख दर्द को बांटें और हम उनको इतनी सहानुभूति दें और सारा टाइम उनका रोना सुनते रहें। कई बार वो हम ही को थका देता है। ऐसे टॉक्सिक लोग होते हैं। हमें अभी झांक के देखना अपनी ज़िंदगी में कि क्या हम वैसे टॉक्सिक इंसान तो नहीं बन रहे ना सेल्फ लव के नाम पे या नेचुरली नॉर्मली हमारे बिहेवियर के तौर पे। अगर हम वैसे व्यक्ति खुद हैं तो प्लीज़ हमें उसको रोकना चाहिए, हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का बिहेवियर जो हमारा होता है वो कभी भी हमें आगे लेके नहीं जाता। इट्स नॉट सेल्फ फॉरवर्डिंग बिहेवियर। व्हेन वी आर आवरसेल्व्स टॉक्सिक पर्सन्स, वी डोंट फॉरवर्ड आवर लाइव्स, वी आर एक्चुअली सकिंग अनदर पर्सन्स एनर्जी एंड इट्स नॉट मेकिंग अस अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग टू बी विद। Sooner or later we will start cutting off people from our lives. हम रिश्तों के बारे में जब बात करते हैं, अगर हम वैसे व्यक्ति बनते हैं जो सब लोगों से सहानुभूति की एक्सपेक्टेशन करते हैं, हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं और लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ही हमारी सहायता करें और हम उनके लिए कुछ ना करें, तो कहीं ना कहीं जाके ऐसे सारे रिश्ते हमारे कटते जाएंगे। So one of the most important distinctions in terms of self-love is to know how to draw boundaries. In our lives, it is very important to have boundaries where we do not allow somebody to come and trample over our feelings. When I'm saying boundaries, I'm not talking about a walled garden. I'm not talking about you cannot access me and you just stop there. That's not what I mean. What I mean is that you can be a part of my life and you can conform to these things, but when you just cross that line, that's when it hurts me and I'm not going to let you get there. And that doesn't need to be said in words. That needs to be really explicitly clear in terms of your behavior, in terms of the way you respond to certain things that people are doing. And if it comes to that, then you might even need to have a conversation about it. So we'll talk about that in detail today.
कई बार हमारी लाइफ में सेल्फ लव के तौर पे हमें अगर अपने आप की खुशियाँ परस्यू करनी है तो बहुत ज़रूरी है कि हम बाउंड्रीज सेट करें। जब बाउंड्रीज मैं बता रही हूँ तो सीमाओं का मतलब ये नहीं कि हम दीवारें खड़ी करें और कोई हमसे बातचीत ना कर पाए, कोई हमारी ज़िंदगी में ना आए। ऐसे नहीं हो सकता। हम जब रिश्तों को परस्यू कर रहे हैं तो हमें देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे आके बातचीत कर सकें, बट एट द सेम टाइम वो कोई एक लक्ष्मण रेखा होती है जिसको वो पार ना करें, जहाँ पे हमें दुख पहुँचता हो। जब तक कि वो हमें दुख नहीं पहुंचा रहे हैं, जब तक वो हमें हमारी एनर्जी को सक नहीं कर रहे, तब तक वो हमारे साथ हैं तो ठीक है। बट उस सीमा को जब वो लांघ लेते हैं तब हमको रोकना चाहिए। तो वो रोकने का तरीका कई बार बातचीत से होता है इन द लास्ट स्टेज, बट ऐसे तो हमारे बर्ताव से उन्हें पता होना चाहिए कि भैया ये आप नहीं कर सकते हो। द सेकेंड थिंग यू कैन डू इज लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज, या हिंदी लैंग्वेज में भी ये शब्द है जिसे हमें सीखना चाहिए, एंड दैट वर्ड इज नो। नहीं, ना करना बहुत अच्छी बात है। जब आपको कोई चीज़ नहीं करनी है तो बिना झिझक के आप ना कह सकते हो। इसके लिए आपको कोई कारण देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। टू बी एबल टू से नो unabashedly and to not have to give a reason why you do not want to do a certain thing or why you do not want to indulge in a certain activity. I think that's a very important thing when you can just say no, I don't want to do it, or no, I don't like it, no, I don't want to have it, no, I don't want to wear it. Saying no is just a fine thing to do, and many times we are so afraid to say no. हमें लगता है कि ना कहने से हम किसी को दुख पहुंचाएंगे, ना कहने से हम किसी के जज्बातों को ठेस पहुंचाएंगे, या हम किसी को हर्ट करेंगे। नॉट नेसेसरी। अगर आपको वो ठीक नहीं लगता तो किसी भी कारण की वजह से आपको उसको हाँ नहीं कहना चाहिए। No matter what the circumstances are, if something is not acceptable to you, it's absolutely fine to say no. No is the most empowering thing to say when you don't need to explain yourself and you don't need to be embarrassed or guilty or feeling regretful that you have said no. I have this very dear friend whom I love, and she's got lovely 2 kids whom I really love, and you know how much I love being with kids. So I used to love to spend time with those children, and I used to find every opportunity to go and spend time with those children. But there came a time when I realized that she was taking it for granted, that every time she wanted to go on a date night, every time she wanted to hang out with her own friends, or she wanted to do anything, she would just call me up and she would say, okay, I'm leaving the children at your place. And it was fine to some extent, but then she just started disregarding what I was doing on that evening or where I was supposed to go. There were times when I just wanted to be at home and just relax, or there were times when I wanted to take my mom and go outside myself, and I couldn't do that just because she would come and pile it on upon me. And I just realized that I can just say no. And I don't need to explain to her, I just don't want to do anything, but I don't want to spend time with your children. I don't want to be the babysitter. Unless it's planned in advance. So it was not working for me. So somewhere there came a time when I just began to say no. And it was so empowering, and it didn't mean anything. And now she's very happy. She manages her children. She's hired a babysitter and she's doing very well for herself. So that me choosing my happiness didn't mean that she cannot do what she wants to do. I think saying that no was a very empowering thing for me to do. मेरी एक फ्रेंड है, बहुत खास सहेली है मेरी। उनके 2 बहुत प्यारे बच्चे हैं जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ, और मैं उनके साथ समय बिताने का हर मौका ढूंढते रहती थी। कुछ समय के बाद ऐसे होने लगा कि जब भी उन्हें बाहर जाना था तो वो आके अपने बच्चों को मेरे यहाँ पे छोड़ जाती थी। मुझे पहले तो बहुत अच्छा लगने लगा था, बट कहीं पे जाके वो एक सीमा उन्होंने लांघ दी। कैसे कर दी कि हर बार जब भी उनको जाना है, चाहे वो अपने पति के साथ मूवी देखने जा रही हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ, दूसरे फ्रेंड्स के साथ वो समय बिता रही हैं, तो वो बस आके मुझे बस कॉल करेंगी, मैं बच्चों को लेके आ रही हूँ, और लाके उनको मेरे घर पे छोड़ के चली जाती थी। एक पल के लिए भी वो ये नहीं सोचती थी कि शायद मेरे कोई प्लान्स होंगे, या मैं अपनी मम्मा के साथ कहीं बाहर जाना चाहती हूँ, या मैं बस ऐसे ही घर पे रहना चाहती हूँ। कुछ भी हो सकता है। तो एक बार जब उन्होंने ऐसे मुझे कॉल करके बोला कि मैं बच्चों को लेके आ रही हूँ, मैंने कहा नहीं, मत लेके आना। और उसने कहा क्यों? मैंने कहा यूं ही मत लेके आना, मेरे पास समय नहीं है। तो जब मैंने ये कहना शुरू कर दिया तो उनको समझ में आ गया। आज उन्होंने बेबी सिटर रखा है और उन्हें जो चाहिए वो करती हैं, या शायद नहीं भी करती होंगी, मुझे नहीं पता, बट कम से कम वो मेरे ऊपर बोझ तो नहीं बन रहा है ना। तो मुझे जब अभी पसंद है तब मैं जाके उनके साथ समय बिता सकती हूँ, बट मुझे हर चीज़ में हाँ कहने की ज़रूरत नहीं है। This is a very empowering place for me to be able to say no. That's it for today. Those of you who like our content, please like, subscribe and share, and come back for more. See you soon. Bye-bye.